हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एजुकेशन हब। मैं वो आपका मनी स्वामी। फ्रेंड्स, आपने जिंदगी में कभी ना कभी या शायद अभी भी एक ना एक दिन मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करूंगा, मुझे भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना है, मुझे भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है करके आपने सोचा होगा। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट डज फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स टू यू, रियली मीन्स टू यू? थिंक फॉर ए व्हाइल, व्हाट डज रियली फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स टू यू? जब ये सुनते हो, ये दो वर्ड्स आप सुनते हो या कोई ना कोई किधर पढ़ते हो या वीडियो देखते हो, कोई ना कोई बोलता है, आपका दिमाग में सबसे पहला क्या आता है? फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये उनके माइंड में आता है कि हैविंग इनफ मनी, हैविंग इनफ वेल्थ, क्रिएटिंग इनफ एसेट्स, इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए, मुझे पैसे के लिए कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये स्टेट को लोग फाइनेंशियल फ्रीडम समझते हैं। यस, ट्रू फ्रेंड्स, दिस इज वन पार्ट, पार्टली इट इज करेक्ट, पार्टली इट इज करेक्ट, लेकिन फॉर मी द रियल फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी फ्रीडम, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग इनफ वेल्थ। फ्रेंड्स, इट इज ऑल्सो अबाउट the real freedom, the real financial freedom for me or for anybody whoever say that they have reached financial freedom. That means not only they achieve money freedom, they also should get a time freedom. And friends, you have crores of rupees of assets in your name. If you do not have a time freedom to enjoy the crores of rupees of assets, if you do not have time freedom to work on yourself, on your health and do what you want to do, then what is the use of the crores of rupees of assets in your name? Yes friends, what is the use of that? So again, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, does it financial freedom means stop working? No friends, I don't say financial freedom अगर अचीव कर लिया तो आपको काम बंद करना है, इसका मतलब ये नहीं। The day when you achieve financial freedom, yeah, the financial freedom should give you choice to work, and also it should give you the choice of work. If you are not getting these two things, if you achieve financial freedom, still it is not a financial freedom for you friends. So yes, it should give you choice to work and also choice of work. The day when you get choice to work and the choice of work, you can say you have really achieved the financial freedom. And if you are already in the stage, congratulations. If not, you can aim for achieving the time freedom, achieving the choice to work and reaching the choice of work. And that is financial freedom. So wish you all the best. Keep learning, keep growing. Bye bye. All the best. See you in my next video.